Hello, Matuji, and you're watching Notice Express on Onbill TV. In a fresh flashpoint in Tripura politics, the Dipra Mota Party has threatened to enforce the strike in Manda Rural Development Block if its Youth Dipra Federation activist Jitu Debrama is not released within 12 hours. The party on Thursday staged a protest march and submitted a mass deputation at the local police station demanding his unconditional release. Debrama was arrested after PJP leaders lodged an FIR in connection with the September 22nd arson at the party's Mandal office, hours after Prime Minister Narendra Modi inaugurated the renovated Ma Tripura Sundari temple at Udaipur. Banners carrying the PM's image were also torched during the incident. Rejecting PJP's allegations, Dipra Mota leaders claimed that the violence stemmed from the ruling party's internal conflicts. Senior leaders including MLA and Swapna Debraman and YTF leader Lemon Debrama joined the delegation, urging the police to maintain neutrality and not act under political pressure. 23rd September Mandai BJP Mandal Bongi Bisingo interfight Bongi Ontor Kundolni Bagai Bora Duita group former Chief Minister Honorable MP Biplab Kumar Deb versus present Chief Minister Honorable Dr. Malik Saha Bongi groupism ni karone Mandai BJP party office Bongi flag festoon abo nosto khajaka boro nijerano nosto khayo Jang first of all the promoter on behalf of Mandai Regional Committee, the promoter on behalf of State Committee, the promoter on behalf of Bubagra, we always condemn the miscreants' activities. Abono borok nijara bisingo walai mani bagai flag sobo office ni chair table furniture abo nosto khayo hunai boro false khaye chiri the promoter ni koroksa the promoter ni koroksa chini warriors Jitu Debrama bukani bumo mononjon Debrama no borok ereng Romoi Klangmani chengtabo dakti thebono unconditionally bono bail man nai abolotei chengtabo oro Mandai thanao dakti unusen borokno yogi maranai hinai chengtini oro বিক্ষোভ মিছিল চাইলে যান খড়গপুর রমজাকা দাবসু জরতে খড়গতামনি মুঙ্গই বড় ফলস এফআইআর খাটিয়ানি जों সাইমানো এবং जों তিনি সারিগ বিপ্রবথা মামলায় অঞ্চল ডিসিশন খালাইনাই যদি রিসেন্টলি अब বিয়োগ রিয়া হঞ্চাই जों খানা 12 ঘন্টাनि বাগै মানগাই আমচাই মানগাই বাগান বন খনন মুং মানব जों दाबो दिनिसे नायाखौ बरि बागै जों তিনি নব First step, Tripura Police এবং BJP রকমই ডিভিশনে বিশিষ্টই আমকে এরেং Tripura থানা অভিযোগ খাইয়ে আমকে টং কসম দমানি রমনি ডাকি মাফিয়া নাই এবং কসম এমনে Tripura Chief Minister Dr. Manik Shah on Thursday said that the trust deficit between PJP and the state's Janajati people is fading away, with more communities acknowledging the party's vision for development. Speaking at a joining program at Rabindra Sadra Bakshi Bhavan, Shah welcomed 920 voters from the Lai district led by Paridosh Debrama, a founding member of Dipra Mota Party. BJP State President Rajiv Bhattacharjee and Tribal Welfare Minister Bikash Debrama also attended the event. Emphasizing Tripura's mixed population, the Chief Minister said harmony and equal opportunities are essential and the government prioritizes safeguarding the rights of all. He also announced plans for a special policy to preserve the distinct identity of 40 Janjati tribes and sub-tribes along with efforts to protect royal era monuments. যাতে ত্রিপুরা আগে না বাড়তে পারে জাতি জনজাতি সবার মধ্যে শুধু জনজাতি না এটা বাইরের থেকে একটা চেষ্টা হচ্ছে যাতে সবাই এই ড্রাগ নিয়ে ভূত হয়ে থাকে তো আমরা এর দিকে আমাদের ফাইট করতে হবে এবং আমরা চেষ্টা করছি
আপনারাও চেষ্টা করছেন। আমরা রেড রিবন ক্লাবও আমরা করেছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশন 2022-23 অর্থবর্ষে 9 কোটি টাকা আমরা দিয়েছি। 2023-24 অর্থবর্ষে এটা দিয়েছি 2022-23, আর 2023-24 কত দিয়েছি? 30 কোটি টাকা। সেই 2024-25 33 কোটি টাকা, 2025-26 35 কোটি টাকা আমরা দিয়েছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনায় 9 কোটি টাকা আমরা দিয়েছি, যেটা 2022-23, আর 23-24 12 কোটি টাকা, আর 2024-25 13 কোটি 20 লক্ষ টাকা দিয়েছি, আর 2025-26 এখন পর্যন্ত 13 কোটি 50 লক্ষ টাকা আমরা দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে এখন পর্যন্ত আমরা 9 কোটি 2023-24 দিয়েছি, এবং 2023-24 আমরা দিয়েছি 10 কোটি টাকা, 2024-25 15 কোটি, এবং 25-26 আমরা 15 কোটি টাকা দিয়েছি। একই টাকা আমরা দিয়েছি। ডেভেলপমেন্ট ফর এগ্রিকালচার, সেখানে আমরা 2.8 কোটি টাকা দিয়েছিলাম 2022-23, এখন 23-24 6.08 করোড় টাকা দিয়েছি। 2024-25 আমরা 6.5 দিয়েছি, 2025-26 7.25 দিয়েছি। তো এইভাবে বিভিন্ন যেটা আমরা চাইছি যে ত্রিপুরাকে যেভাবে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যাতে আরও বেশি করে আমরা কাজ করতে পারি, সেই কাজগুলো আমরা করছি। বিভিন্ন সামাজিক যে সহায়তা প্রকল্প, সেগুলো আপনারা জানেন যে প্রায় 4 লাখের উপরে আমরা বিভিন্ন যে সামাজিক প্রকল্প মাধ্যমে আমরা দিচ্ছি। তো আজকে আমাদের বুঝতে হবে, এখানে জনজাতি ভাই বোনেরা আসছে, আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখবো যে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আপনারা এসছেন, এবং আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টিকে যদি আপনারা ত্রিপুরাতে এস্টাবলিশ করতে পারেন, সেটা ফর এভার সারা জীবনের জন্য একটা আপনারা পতাকা ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি এলাকার মধ্যে আপনারা পুঁতে দিলেন, যেটা নেক্সট জেনারেশন সেটা দেখবে, এবং আমাদের মধ্যে যে সমস্যা, যে চিন্তা ভাবনা মাঝে মাঝে হয়, তার থেকে আমরা দূরে থাকতে পারবো। আশা করি আজকের এই যোগদানে আপনারা নিশ্চয়ই খুশি হবেন, এবং যেখানে যা দরকার এই সরকার আপনাদের সাথে থাকবে, আমাদের পার্টিও আপনাদের সাথে থাকবে। সবাইকে আবার আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি। A youth reportedly depressed by the sudden demise of Assam's legendary singer Zubin Garg jumped into the Brahmaputra river from Sairighat bridge. In a viral video, the youth was seen sitting on the bridge, and before jumped into the river, he teared his shirt and said, "Jai Zubenda." The STRF has launched a search operation to trace the whereabouts of the youth. A young boy is in Assam's Majuli also reportedly attempted suicide following the tragic news of legendary singer Zubin Garg's untimely demise. The 18-year-old, identified as a resident of Madhobil Chairali in Majuli, allegedly consumed phenyl in a desperate act. Locals immediately rushed him to the Karmur District Hospital, where he is currently undergoing treatment. According to reports, 4 youths have taken their own lives after hearing the news of the death of their heartthrob. Goods transport along National Highway 2 had come to a halt after the Senapati District Truck Owner Association and the Senapati District Truck Drivers Union and jointly launched a lightning staring down agitation. The protest had followed the alleged assault and arrest of truck driver Ashibri David, Tungchoi village by police personnel at Sapormena. The incident had reportedly occurred around 5:30 a.m. when the driver had been stopped at what truckers had described as an unauthorized checkpoint located 200 to 300 meters from the official police gate. He had allegedly been beaten, kicked and punched before being taken into custody. The association has claimed that no arrest memo had been issued and that the driver had remained in police custody. Condemning what they had termed an unlawful act, the 2 truck bodies had announced the steering down agitation with immediate effect, disrupting traffic on the state's key supply route. They had further cautioned that the protest could intensify if the matter had not been resolved at the earliest. Ore yeno, kamu saprona police case na.
Despite BJP and Tipra Mota paying coalition partners, tensions persist with recent allegations of Tipra supporters attacking BJP officers. Tripura Tribal Welfare Minister Bikash Debraman has accused Tipra Mota supporters of setting a BJP office ablaze and said no one can weaken the Saffron party in the northeastern state by carrying out such attacks. He also warned those who had torched the BJP office at Mandwai on Tuesday night of dire consequences. According to reports, the office was allegedly torched by miscreants on the night Prime Minister Narendra Modi visited Tripura. Norongai, nijini bohok pungnani, nijini nok kaham khanyani, omni bade tai kun gari khanoni. Abon bagi tinti brahmatharo, bishes kai tinti brahmatharo, patni mopong program tongo. Abon bagi ang tini o kono sanai, patni chini barote Janata Party BJP ni flag kaje tongono, borok ke bono singya oi, flag no pujai kipka. Ang abon bagi bang affair khanyani. Karon sing je samamani kuno dol ni flag no punya hanggai. All dol ni je naikol tong all dang fan phun khanyang ngai sung horan nangai every je system tong all system khanyang ngai kintu boro amno khaya boro bahudir phungu seng nijina raja hani wangsu ge oba ge je khai tong gundagiri khai tong ni bom no thung ke bate phi abel bugai dini je sini je mandani je party bise je hot phanan galamani o hot phanan rangno boro oro 6-7 jona tong so police report tong 6-7 jona boro oron boro gobang mani bazar je paibe aku borok pustango pujani jotono hom dong khai osamotai nanyani bazar hati khanyani painai ugo painai rok bazar khanyai rok halai rok joton kacha atong kongi kirilai mani ngi tong kha o kirima bisingo se tini oba hageng lai tong hangai borok da tibarasan thancha nangnai oma hai borok tibarasan thancha naya borok kok chimse thancha kintu borok kuno dino tibarasan hangrai bagi borok naya tini BJP party bisabai tamanai kono mana kere Orang nasil na bade tai kuno gerei kayak din sekang nor kena 2 din sekang heja marawo sini Janata Party Morcha ni vice president Mongol de Burman bo bokhor khadir buka sab budaka tibrasan budaka kintu kebang ma borok tini oda comment khayo BJP khanye ke sui musuk ko nti barasan mo tibramo ta khanye ke bukan ne bo sungsani borong kaja ne ka borok kaham ha kok sana se regia ko takhono kok ni buk ni kok sana se regia ko sui musuk apni mangsi ko bongo ko he dur aba hai mangsi ko borok da rasidi khanye borok bongni dol ni je oda ma hujang nai borok nuge da ba hai o comment khai taman nuge da busuk siplai ka borok ba. In a major breakthrough against insurgents, security forces recovered a massive catch of arms, explosives and uniforms in Tobal district on Thursday. The whole has been linked to the People's Liberation Army, the same outfit responsible for the recent deadly ambush on Assam Rifles at Nambol. The recovery was made during a search operation at Salungpam, Mamanglekai, near Ringpam village under Herikok police station. Forces seized rifles, carbines, grenades, explosives and communication sets along with a large stock of camouflage uniforms, bulletproof jackets and PLA insignia. The Nambol attack on Assam Rifle earlier this month claimed the lives of 2 personnel and left 5 injured. The prime accused in that attack has already been arrested by police, but Thursday's recovery highlights the group's continued presence and preparedness. Officials said that operation is part of sustained counter-insurgency efforts to dismantle militant networks and restore peace in Manipur. In a significant twin blow to insurgency and the narcotics trade, security forces arrested an active militant cadre and made one of the largest drug seizures in recent times during separate operations in Imphal East on Thursday.
The day's action began with the arrest of an identified member of the KCP PWG group acting on intelligence forces apprehended MD Dajuddin Shah, also known as Babu 37, from the Kurai Chairen Tong area under Hengang police station. Shah, a resident of Kshetriya Wanglaikai, was currently staying at Kabesoi near the 7MR gate. One mobile phone was recovered from his possession. In a parallel but separate operation on the same day, security forces assisted by members of a civil society organization struck at the heart of a major drug network. They arrested Mesnam Gidchandra, 38, of Kurai Konsam Laikai from Kurai Sajoi Laikai area under Porompat police station. The arrest led to a substantial seizure of illicit pharmaceuticals. Officials confirmed the recovery of 23,304 tramadol tablets, 1,390 Nitrapal tablets and 1,383 bottles of Bircodex syrup from Hitachandra's possession. The bus marks one of the largest drug seizures in the district in recent times, an official stated. These operations followed another interception on September 24 in Kakting district, where Manipur police seized 400 liters of DIC liquor from a Toyota high-rider vehicle at the Nongpo Lamkai area under Wangno police station. The seized liquor was subsequently disposed of following due procedure. Commenting on the back-to-back success, authorities reaffirmed their resolve to maintain pressure on anti-national elements and illegal activities. They emphasized a continued commitment to curb insurgency, crack down on the narcotics trade and tackle the illegal distribution of liquor to ensure peace and public order across the state. At the inaugural session of World Food India 2025, Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma extended gratitude to the Government of India for providing a platform that unites stakeholders across the agricultural and food processing ecosystem. Speaking to reporters, CM Sharma thanked the Government of India, the Prime Minister, the Agriculture Minister and the Food Processing Minister on behalf of the Northeast and Meghalaya. Through this program, our farmers, entrepreneurs, cooperatives, self-help groups, buyers and technology providers will all be able to come together on one platform. This will benefit everyone. The Chief Minister emphasized Meghalaya's commitment to sustainable agriculture, stating that the state is witnessing a steady increase in organic production and is well on its way to becoming a model for organic farming in the Northeast. सबसे पहले तो मैं भारत सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी और हमारे फूड प्रोसेसिंग मंत्री, मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं नॉर्थ ईस्ट और मेघालय की तरफ से कि उन्होंने ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इस प्रोग्राम के थ्रू जो हमारे अलग अलग किसान, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो बायर्स हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म में साथ आकर एक तरीके से मिल पाए और अलग अलग चीजों या एग्रीकल्चर के इशू में या फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में जो ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स को साथ लेके आए, उससे सभी को मेरा मानना है फायदा होगा और इसके लिए मैं सबसे पहले भारत सरकार को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज जो जिस तरीके से हमारे स्टेट में आज ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का जो एक ग्रोथ है, वो अगर आप देखें पूरे नॉर्थ ईस्ट में और पूरी दुनिया में अगर आप कंपेयर करें तो मेघालय काफी तेजी से आज एक ऑर्गेनिक ग्रोथ और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पे अब अपीडा के थ्रू उनके सहयोग से हमें सर्टिफिकेशन एजेंसीज लोकली अभी सर्टिफाई हुए हैं और उससे काफी फायदा मिल रहा है और हमारा लक्ष्य यही है कि हम लोग आने वाले 2-3 सालों में हमारे स्टेट में कम से कम 1 लाख हेक्टेयर का जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए और ये लक्ष्य हम लोग जरूर पूरा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जब ये लक्ष्य पूरा होगा तो मेघालय जो है पूरे देश में सबसे लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिक प्रोड्यूसिंग एरिया होगा। एक लास्ट सवाल की नॉर्थ ईस्ट की बात होती है तो पहले कहा जाता था कि बहुत पीछे है ग्रोथ इंजन में,
नॉर्थ ईस्ट लुक एट नॉर्थ ईस्ट जो पॉलिसी है सरकार का, इसका कितना इम्पैक्ट आपके राज्य में हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में हुआ है फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट? देखिए, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं पिछले 11 सालों में नॉर्थ ईस्ट को देखने का पूरा जो नजरिया बहुत बदल गया है। पीएम साहब का एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ध्यान है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जोर है, और इसका जो रिजल्ट हम सबको दिखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिक मेजर्स डेवलपमेंट काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और हर मंत्रालय में जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल फोकस की तरह आज तेजी से काम बढ़ रहा है। अगर आप मेघालय स्टेट को देखें तो आज की डेट में मेघालय पूरे देश में सबसे तेज ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नंबर 2 पर है, यानी कि हम लोग सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज मेघालय है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये खाली 1 साल नहीं, पिछले 3 सालों से हमारा जीएसडीपी ग्रोथ जो कांस्टेंट प्राइसेस पर है वो एवरेज 10% के ग्रोथ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि जो हमारा ग्रोथ ये सिर्फ 1 साल नहीं लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें दिख रहा है। और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हमारे पॉलिसी सही हो, हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमारे अलग अलग प्रोग्राम सही हो, और सपोर्ट भारत सरकार और स्टेट की तरफ से सही तरीके से हो, तभी ऐसा एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसलिए बहुत चीजें हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में और तेजी से नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा, और हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट और मेघालय का योगदान देश के ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा होगा, ये मेरा मानना है। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.